Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today I will present meningiomas. Meningiomas are most common benign tumor of central nervous system. So meningioma arises from a layer of tissue which is called arachnoid cap cells. These cells cover brain and spinal cord. Epidemiology. Meningiomas are most common benign tumor of central nervous system. They are more common during 7 decades of life. Meningiomas are more common in females. Again, they are arise from meninges, may occur intracranially or within the spinal canal. They are thought to arise from arachnoid cap cells which reside in the arachnoid layer covering the surface of brain. Rarely meningiomas can be found intraventricular or intraosseous, but these variants are rare. Risk factors include family history with first degree relatives, neurofibromatosis, workers working ionizing radiations, people who are taking oral contraceptive pills, hormonal replacement therapy. Obesity is also a risk factor. For any reason, intrathecal use of methotrexate is a risk factor for development of meningioma. Meningiomas are associated with the following syndromes like Lee-Fromeny syndrome, Turcos syndrome, Gardner syndrome, von Hippel-Lindau disease, Codin syndrome, Golin syndrome, and MEN type 1 syndrome. Meningiomas present with different type of symptoms. Basically, symptoms depends on the location of meningiomas. They may present with the seizures secondary to irritation of brain, and secondly, they can present with a headache due to compressions, focal weakness, dysphagia. Meningioma may be present on the skull and present as bulging mass. These are some signs and symptoms according to location of meningioma, like parasagittal meningiomas present with monopresence of contralateral leg, subfrontal, presented with the behavioral changes and urinary incontinence. इसमें एक ज़रूरी बात है सर, बहुत सारे पेशेंट हमारे साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं. अभी भी सर एक पेशेंट जो है वो एडमिट है जिसका बाईफ्रंटल ग्लायोमा है, उसको 25 साल से वो साइकेट्री के मेडिसिन ले रहा है. तो एक दफ़ा ज़रूर एमआरआई होना चाहिए. साइकेट्रिस्ट तो हमारे बड़े नाराज़ होते हैं एमआरआई सीटी स्कैन पे, लेकिन ज़रूर साइकेट्री वालों को भी एक दफ़ा देखना चाहिए. एंड olfactory groove meningiomas present with anosmia with the possible ipsilateral optic atrophy and contralateral papilledema, which is called Kennedy-Foster syndrome. Cavernous sinus meningiomas present with multiple cranial nerve pulses 2, 3, 4, 5, 6, leading to decreased vision, diplopia with associated facial numbness. Occipital meningiomas present with contralateral hemianopsia. Cerebellopontine angle meningiomas present with decreased hearing and facial weakness along with the facial numbness. Spinal cord meningiomas present with spinal pain and Brown-Sequard syndrome if they are localized to one side. Optic nerve meningiomas present with exophthalmos, monoocular loss of vision or blindness, ipsilateral dilated pupil that does not react to direct light stimulation but might contract on consensual light stimulation. After monoocular optic nerve swelling with optic ciliary shunt vessels. Sphenoid wing meningiomas again will present with the seizures and multiple cranial nerve pulses if it spreads through superior orbital fissure. Tentorial meningiomas may protrude with the supratentorial and infratentorial compartments, producing symptoms by compressing specific structures within these two compartments. Foramen magnum meningiomas present with the paraparesis, sphincter troubles, tongue atrophy associated with fasciculations. Here are some miscellaneous signs and symptoms like intraventricular meningiomas may present with obstructive hydrocephalus.
Meningioma in the vicinity of sella torsica may produce panhypopituitarism. Meningiomas thus compress visual pathways, produce visual field defects depending on their location. Rarely, choroid meningiomas can present with hematologic disturbances, namely Castleman syndrome. Here is some classification according to location of. Basically, we can classify meningioma according to WHO grade as well as location. So this classification is basically classification according to the location. This is a parasagittal meningioma, which is usually attached to the superior sagittal sinus, and patient present with a contralateral monopresence, as I have already mentioned. Second one, this is convexity meningioma. Again, symptoms depend on the lobe involved. This is phenide wing meningioma. It will present with multiple cranial nerve pulses if superior orbital fissure will be involved. And this is a suprasellar meningioma. It will present with panhypopituitarism and bitemporal hemianopia with multiple cranial nerve pulses. This is a posterior fossa meningioma. Will present with the respiratory abnormalities, ataxia, cardiovascular abnormalities, nystagmus and imbalance. And this is olfactory groove meningioma, which will present with a anosmia, ipsilateral optic atrophy and contralateral papilledema, which is called Forrester-Kennedy syndrome. And this is a foramen magnum meningioma, which will present usually with a paraparesis, sphincter disturbances and tongue atrophy. And this is spinal meningioma. Usually spinal meningiomas depend on their location for symptoms, like if a patient have a dorsal meningioma, patient will present with spastic paraparesis. If it is a cervical meningioma, it will present usually with a spastic quadriparesis, and if meningioma is a lumbar spine, it will present with the paraplegic along with the Beckett. This is optic nerve sheath meningioma. Usually it will present with the monocular vision loss and exophthalmos. And this is a CPM angle meningioma. It will usually present with the hearing loss along with facial palsy and numbness. No investigations for meningioma. Usually plain X-rays have no wrangle any role in diagnosis of, and management. But we will discuss for historical purposes. Historically, a number of features were observed, including enlarged meningeal artery grooves, also hyperostosis and lytic regions. We will see calcifications on X-rays, displacement of calcified pineal gland choroid plexus due to mass effect. So basically, we will starting investigated with a CT scan. CT scan first investigation for neurological sign. It may present as incidental find. Typical CT scan findings: punctate calcification. 20 to 30% CT scans will have calcification. Punctate a large central peripheral calcification. Slowly progressive benign in nature. Malignant lesions are rarely malignant. Then CT scan, there will be hyperostosis, means there is increased bone growth, and but we have to differentiate it from osteoma and Paget's disease. Some meningiomas present with lytic lesions, they will destroy the bone associated with the hyperostosis. But it will have to differentiate from myeloma, metastasis or sarcoma. So the investigation of choice for meningioma is basically a MRI with a contrast. The tumor will be sharply circumscribed, unilobular mass with a broad-based dural attachment. Basically, meningioma will arise from the arachnoid cap cells, which will
which cover meninges, so its base will be broad, so the tumor base will be broad. They displace brain tissue but does not invade it. Remember, this is very important thing. Meningioma will never invade brain tissue, but actually it will displace brain tissue. This is again a meningioma, parasagittal meningioma, unilobular mass with a broad-based dural attachment. This is a broad-based dural attachment which is attached to the dura of superior sagittal sinus and smooth, well-defined borders. On T1 and T2 images, meningiomas are usually iso-intense to normal gray matter, in contrast with other intracranial tumors, which will be usually hypointense or hyperintense. Nearly all meningiomas enhance rapidly and intensively following IV contrast administration. ये likely मतलब ये T1 में ये iso इंटेंस है और सुपीरियर सैजिटल साइनस के साथ अटैच है. जब इसको हम कंट्रास्ट दे रहे हैं तो ये होमोजेनियसली जो है वो कंट्रास्ट ले रहा है. फीचर्स ऑफ एक्स्ट्रा एक्सियल मास. बेसिकली meningioma is an extra axial mass, and we must differentiate it from an intraaxial mass like glioma. तो इसमें इन्होंने कुछ बताए हैं. एक CSF, there will be CSF cleft sign which will be between the meningioma and normal brain matter. There will be a layer of CSF. Wide matter, there will be wide matter buckling, vessels pushed inside, broad base towards the dura. Again ये यही मैं बता रहा था कि ये dura की तरफ जो होगा ये broad base होगा. Here is some difference between extraaxial ones versus intraaxial mass, because to have differentiate meningioma from other brain tumors, we must have a clear concept which is extraaxial and which is intraaxial. So this is extraaxial. Look at this image. Basically the tumor not invading the brain, but it is pushing the brain and along with the CSF cleft sign. Widened CSF space, displacement of brain deeper, lesion has broad base towards dura. Again मतलब dura की तरफ इसका जो base है वो broad base है. While intraaxial mass, look at this. This tumor is basically invading the brain. It is within the brain matter. It is not extraaxial. Narrow CSF space, displacement cortex towards the periphery. All tumors, all meningiomas will have pseudocapsules. What is pseudocapsule? Represents the dura itself between the tumor and the brain parenchyma, which is pseudocapsule. Again, it is very important for differentiation of meningioma from other tumors. Dural tail sign. This is a dural tail sign. This is basically dural tail is basically a arachnoid layer which looks like dura on both sides. This is a dural tail sign, but it is not very specific. It can be seen in the glioma, brain metastasis, acoustic neuroma and lymphoma, but it will definitely help us in reaching the diagnosis. Acha, here are some pictures of atypical meningiomas. Usually patient with meningiomas did not have much brain edema, but look at this this picture. This is a meningioma, but on T2 images there is very much massive brain edema. This is a feature of atypical meningioma, means this is a WHO grade 2 or grade 3 meningioma. Again, this is another atypical meningioma with a massive brain edema. And look at this. This is again a meningioma, but it is a cystic and with a very small solid component. These are typical features. Again, this is again a cystic meningioma, but in 99.9% cases meningioma will be well circumscribed and will take a contrast homogeneously with no or little brain edema. These are some WHO grade 3 or WHO grade 2 meningiomas. Acha.
आफ्टर आर इन्वेस्टिगेशन से अगर हमें फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो जाए बायोप्सी से पहले फिर हम MRS कराते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें फिर मुख्तलिफ पीक्स आते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं हाई ग्रेड, लो ग्रेड, मेनिंजोमा और साथ में एब्सेस वगैरह से। MR स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस। द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन मेनिंजोमास हाई कोलिन पीक्स विद लो और एब्सेंट N-acetyl aspirate and creatinine peaks and variable amount of lactates. High ratio of alanine to creatinine has been found in meningioma, relatively specific finding. MR spectroscopy may differentiate histologically atypical meningiomas on the basis of lactate peak at 1.3 ppm. बेसिकली जो ये लैक्टेट पीक जो होता है ये जहाँ पे एनारोबिक रेस्पायरेशन हो वहाँ पे ये लैक्टेट ज़्यादा होता है। जो एटिपिकल मेनिंजोमास होते हैं उसमें बेसिकली एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है उस एरिया में, तो उसमें ये लैक्टेट पीक ज़्यादा होगा। तो यही बता रहे हैं कि MR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम टिपिकल और एटिपिकल मेनिंजोमा भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, डिजिटल सब्सट्रक्शन एंजियोग्राफी ये भी अभी रेयरली यूज़ होता है, लेकिन किसी ज़माने में इसको यूज़ करते थे तो इसमें एक साइन आता था मदर इन लॉ साइन। ये जो करते थे ये MRI से पहले करते थे। मदर इन लॉ साइन मतलब जो होता है कि जब डिजिटल सब्सट्रक्शन एंजियोग्राफी हम करते हैं तो जो कंट्रास्ट होता है कम्स अर्ली, स्टेज लेट एंड इज़ वेरी डेंस। ये मेनिंजोमा में एक प्रेजेंटेशन है जैसा कि उन्होंने जहाँ पर दिखाया है, इसको मदर इन लॉ साइन कहते हैं। लेकिन बेसिकली अब डिजिटल सब्सट्रक्शन एंजियोग्राफी कुछ सेंटर्स में अच्छी जगहों में प्री ऑपरेटिव एम्बोलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं टू रिड्यूस इंट्रो ऑपरेटिव ब्लड लॉस। अगर मेन फील्ड्स मिल जाए तो उनको एम्बोलाइज करते हैं ताकि सर्जन को करने में आसानी हो जाए सर्जरी। अच्छा, as I have already mentioned before, we can classify meningioma according to the location as well as according to the WHO grade. So most meningiomas are benign WHO grade 1, which usually comprise of 80 to 90% of meningiomas, while having recurrence rate of 70 to 20% after surgery. And then atypical clear cell meningiomas, which are basically WHO grade 2 type meningiomas, comprising of 5 to 15% of meningiomas, with recurrence rate of 30 to 40% after surgery. Malignant meningiomas, anaplastic or rhabdoid papillary meningiomas, which comprise of 1 to 3%, and recurrence rate is 50 to 80% after surgery. Acha, then come to the management of meningiomas. Usually meningiomas की जो main management है ऑब्जर्वेशन के बाद वो सर्जरी ही है, लेकिन जहाँ पर मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। ट्रीटमेंट्स डिपेंड्स ऑन मेनिंजियोमा साइज, लोकेशन एंड ऑन पेशेंट एज, सिम्टम्स, कोमॉर्बिडिटीज, हेल्थ स्टेटस एंड ट्रीटमेंट प्रेफरेंसेस। सबसे पहले पेशेंट इज elderly patient with a small meningioma and asymptomatic, so we will observe, we will do nothing because meningiomas usually grow very slowly. So old age हो, patient fit ना हो और छोटा हो size में, तो उसमें हम observation करते हैं. But if meningioma is large, patient is fit and patient wants to go for treatment, then we will go for complete surgical resection. Basically, complete surgical resection is a gold standard for meningioma. Symptomatic meningioma, asymptomatic meningioma या asymptomatic meningiomas which are progressively enlarging in fit tumors, तो हम surgical resection के लिए जाते हैं. Radiation therapy, inoperable or recurrent meningioma after surgery or radiation therapy. अच्छा, radiation therapy में स्पेशली इसमें स्यूटेक्टिक रेडियो सर्जरी करते हैं. उसमें कुछ उनकी अपने प्री रिक्विजिट से आगे मैं बताऊंगा. उसमें साइज़ 3 सेंटीमीटर से कम हो और इसके अलावा ओल्ड एज हो, पेशेंट सर्जरी नहीं कराना चाहता हो. बाकी कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी की इसमें मेनिंजियोमा में कोई इतना कोई रोल नहीं है. मतलब एक सेल्वेज ट्रीटमेंट के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोल नहीं. असल है SRS जो है वो इसकी, इवन SRS जो स्यूटेक्टिक रेडियो सर्जरी
अब हमारी कराची में जिन्ना हॉस्पिटल और कुछ हॉस्पिटल में सिंध गवर्नमेंट ने वो किया हुआ है जो गामा नाइफ है, इसको गामा नाइफ भी कहते हैं। तो ये जो है ये ऑलमोस्ट मतलब इसके रिजल्ट सर्जिकल जैसे ही हैं। अच्छा, मेडिकल थेरेपीज में बी ट्राइड बट हैव लिमिटेड एंड इनकंसिस्टेंट एविडेंस ऑफ एफिकेसी। अच्छा, सर्जिकल ट्रीटमेंट। The consent principle in meningioma resection are following. If possible, all involved or hyperostotic bone should be removed. The dura involved by the tumor as well as dural rim that is free from tumor should be resected. Dural teeth that are apparent on MRI are best removed, even though some may not be involved with the tumor. But for care, dural tail भी अगर possible हो तो निकालना चाहिए। Make a provision for harvesting suitable dural substitute, pericranium या fasciolata लेके तो मतलब फिर ड्यूरोप्लास्टी करनी चाहिए। The surgeon can use commercially available dural substitutes, but still जो अपने होते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब fasciolata और pericranium जो होता है वो बेस्ट होता है, बाकी वो commercially भी अवेलेबल है। If feasible, always start by coagulation the arterial feeders to the meningioma. बेसिकली वो कुशिंग का नाम तो सारों ने सुना होगा, मेडिकल में हमने सुना है। तो कुशिंग ने कहा है कि ये बेसिकली एक ब्लडी ट्यूमर है, तो यही रूल बरताता है। मेनिंजियोमा की सर्जरीज करते हुए हम कोशिश यही करते हैं, शुरू में हम जो ड्यूरल क्लेफ्ट होता है जो ब्रेन और मेनिंजियोमा के दरमियान, वहाँ से जो फीडर्स आते हैं वो फीडर्स को पहले कोआगुलेट करते हुए मेनिंजियोमा का एवास्कुलर बना कर फिर उसको निकालना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, फिर बंदा कंट्रोल से ब्लीडिंग निकल जाती है। अच्छा, ये कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट में मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल ऑप्शंस का बताया। फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपिक रिमूवल ऑफ मेनिंजियोमास थ्रू द नोज, ओल्फैक्टिव ग्रूव मेनिंजियोमा है, टुबरकुलम सेला मेनिंजियोमा है, सेलर मेनिंजियोमास है। तो ओल्फैक्टिव ग्रूव मेनिंजियोमा में हम एंडोस्कोपिक ट्रांसक्रिप्टिफॉर्म प्लेट के थ्रू जाकर तो इसको निकाल लेते हैं। टुबरकुलम सेला और सेलर मेनिंजियोमा हम जो है वो ट्रांसफिनाइडल जाकर हम निकाल लेते हैं स्फिनाइड साइनस से, और ये पाकिस्तान में रूटीन में हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली हम तो खैर फिलहाल हमारे पास सामान भी आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी सर, हाँ पाकिस्तान में तो करते हैं सर, ट्रांसफिनाइडल करते हैं, डिस्कोप हुआ तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा की होल माइक्रो सर्जिकल रिमूवल यूजिंग आईब्रो इंसिजन, ये भी बेसिकली ओल्फैक्टिव ग्रूव मेनिंजियोमा और स्फिनाइड रिंग मेनिंजियोमा के लिए एक आईब्रो इंसिजन देके तो यहाँ से छोटी सी की होल बर होल करके उस क्रेनियोटमी करके भी करते हैं। अच्छा, ये एंडोपोड रिमूवल, ये इंट्रावेंट्रिकुलर जो मेनिंजियोमास होते हैं उनमें अगेन हम एंडोस्कोप के जरिए अंदर जाके तो हम एंडोस्कोपिकली कर सकते हैं। अच्छा, ये एक सैमसंग ग्रेडिंग है तो ये काफ़ी पुरानी, लेकिन ये अभी भी स्टिल ये एप्लीकेबल और ये बहुत अच्छी। इसमें इन्होंने ये बताया कि आप कितना रिसेक्ट करते हैं, फिर रिकरेंस रेट क्या है। आप ग्रेड 1 रिसेक्शन करते हैं जिसमें रिसेक्शन ऑफ अंडरलाइंग बोन विद एसोसिएटेड ड्यूरा, तो इसमें 10 ईयर्स में रिकरेंस रेट 9% है। अच्छा, इसके अलावा हम अगर ग्रेड 2 रिसेक्शन जिसमें हम कंप्लीट रिमूवल करते हैं, रिसेक्शन एंड कोआगुलेशन ऑफ एसोसिएटेड ड्यूरा करते हैं, तो उसमें 19% रिकरेंस का चांस होता है 10 ईयर्स में। कंप्लीट रिमूवल करते हैं जिसमें हम सिर्फ ही हम ट्यूमर निकाल लेते हैं, तो उसमें 20% जो है ना 29% रिकरेंस का चांस होता है 10 ईयर्स में। सब टोटल रिसेक्शन करते हैं, किसी भी वजह से हम इंट्रा ऑपरेटिवली हमें ब्लीडिंग होती है, बड़ा वो होता है, हम सर्जरी को स्टॉप करते हैं, उसमें फिर यही है कि 44% रिकरेंस रेट है। सिर्फ डिकम्प्रेस करते हैं, ओल्ड एज है और हम जी नहीं दे सकते हैं, हम कोई लोकल तरीके से हम स्कार्फ ब्लॉक से हम डिकम्प्रेस करते हैं, प्रेशर कम हो जाए, तो उसमें फिर रिकरेंस रेट 100% है आफ्टर 10 ईयर्स। ये बेसिकली रिसेक्शन विद रिकरेंस बता रहा है। अच्छा, ये मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, प्री ऑपरेटिव एम्बोलाइजेशन टू मिनिमाइज इंट्रा ऑपरेटिव ब्लीडिंग, ये अच्छे सेंटर्स में होता है। इसके अलावा ये अल्टरनेटिव है फॉर नॉन सर्जिकल कैंडिडेट्स फॉर क्रेनियोटमी, मतलब ये अगेन ओल्ड एज है और आप कहते हैं सिम्टम फ्री हो, पेशेंट को रिलीफ मिले, तो ये जो है ट्यूमर श्रिंकेज करता है, ब्लड सप्लाई को जब हम एम्बोलाइज करते हैं अच्छी तरह। नो, आई विल डिस्कस रेडियोथेरेपी इंडिकेशंस will definitely include primary treatment for inoperable tumors, patients with incomplete resection, complete tumor eradication not possible but tumor shrinkage reported. जो रेडियोथेरेपी का डोज है वो 54 ग्रे है फॉर ग्रेड 1 एंड 60 ग्रे है फॉर ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4।
टाइप्स मैंने पहले ही बताया था, कन्वेंशनल रेडियोथेरेपी एंड स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरी या रेडियोथेरेपी। इसमें हमारे पास गामा नाइफ होता है और साइबर नाइफ होता है, और हमारे पास पाकिस्तान में जो मशीन है जिना हॉस्पिटल कराची में, वो गामा नाइफ है। गामा नाइफ की अच्छी बात ये है कि ये हेड एंड नेक के अलावा जो और भी जो हमारे बॉडी के ट्यूमर्स हैं उनमें इस्तेमाल होता है, सॉरी साइबर नाइफ इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पास कराची में शायद गामा नाइफ है जो ज़्यादातर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के ट्यूमर्स के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये फिर फ्रैक्शनेटेड स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, ये बेसिकली रेडियो सर्जरी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, IMRT, प्रोटॉन थेरेपी, ये सारी जो हैं ये बेसिकली SRS की डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी फॉर ग्रेड 1 ट्यूमर वी विल गिव 50 to 54 ग्रे, फॉर ग्रेड 2 वी विल गिव 59.4 to 63 ग्रे। ये हम एक ही डोज होता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एक ही डोज होता है, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी एक ही डोज होता है, फिर हम सीरियल MRIs करते हैं तो विद पैसेज ऑफ टाइम वो फिर हमें पता चलता है। उसमें फिर अच्छी बात ये है कि हम सेकंड डोज भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। SRS में अगेन इन्होंने ये कहा कि 12 to 15 ग्रे फॉर ग्रेड 1 और 16 to 20 ग्रे फॉर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, और FSRT भी 5 to 6 ग्रे है और 2.5 ग्रे है। अगर हम 5 साइकिल्स देते हैं, 15 साइकिल्स देते हैं तो हम फिर जो है 2.5 ग्रे देते हैं और 50 साइकिल्स देते हैं। ये फ्रैक्शनेटेड इसने स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी की बात की है। स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी है, साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं, एट्रामाइसिन देते हैं, विनक्रिस्टिन देते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी का कोई सच कोई FDA से अप्रूव्ड या कोई प्रूव्ड इसमें रोल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी किसी ज़माने में बड़ा इन था, टेमोक्सिफिन, क्योंकि इसमें कहते थे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स जो होते हैं, किसी ज़माने में यह बात भी बड़ी थी, टेमोक्सिफिन, मेफिप्रिस्टोन, टीमोजोलमाइड। अच्छा, इसके अलावा सोमेटोस्टिन एनालॉग्स देते हैं जिसमें ऑक्ट्रियोटाइड, इंटरफेरॉन अल्फा, टारगेटेड थेरेपी जिसमें इमाटिनिब, और इसके अलावा गिफ्टिनिब है, लेकिन इसका भी अगेन ये कि कोई इस तरह प्रूव रोल नहीं है। प्रोग्नोसिस median patient survival reported as 10 year for WHO grade 1 tumor, 11.5 year for WHO grade 2 tumor, 2.7 year for WHO grade tumor. 5 year survival rates 81% for age 20 to 61%, 64, while 56% for age more than 65 year. Definitely जितना old age होगा इतना उसकी सर्वाइवल कम होगी। पोर प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स में एज यूजुअल मेल होना एक पोर प्रोग्नोस्टिक मार्कर है। कन्फर्मेटरी इंडेक्स अगर लेस देन 4 हो तो भी वो एक भी पोर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, और साइज मोर देन 10 ml हो तो भी एक पोर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑपरेटेड dozens of cases of meningioma in our hospital, and now I will present 2 cases which have been operated in our hospital. First patient Mehreen, age 30 year, rest of Sikardu, presented to us with a chronic headache not responding to the oral medications, and she was complaining of headaches usually in the early morning. So after failure of oral medication, we have investigated the patient, and when we did CT scan showed sphenide wing meningioma, as I have already mentioned in my presentation. This is a sphenide wing meningioma. After CT scan, then we this is the same CT scan with the focused images. After CT scan, we did MRI, which again shows the same tumor, sphenide wing meningioma, and this is again same patient with the same tumor, and this is the intraoperative picture of that patient Mehreen from the Sikardu.